Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा हुआ संबंधित ताजा समाचार लेकर हाजिर हैं आपके समक्ष। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम डॉक्टर शर्मा। थैंक यू, शुक्रिया। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Reserve Bank of India keeps repo rate unchanged at 6.5%. RBI Governor Shaktikanta Das says policy decision is a pause, not a pivot. And key domestic stocks ends on positive note after RBI's announcement. Sensex rises 144 points to end above 59,800 mark, while the Nifty settles near 17,600 level. भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दरों में कोई फेरबदल नहीं करते हुए रेपो दर 6.5% पर स्थिर रहने की घोषणा की। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि ये एक विराम है, प्रधान आधार नहीं। और घरेलू शेयर बाजार ने रिजर्व बैंक की घोषणा का किया स्वागत। सेंसेक्स 144 अंक उछला, 59,800 के स्तर से ऊपर आया। निफ्टी 17,600 के नजदीक बंद हुआ। The Reserve Bank of India, RBI, has decided not to change key policy rates. RBI's Monetary Policy Committee, headed by its Governor Shaktikanta Das, unanimously decided to keep the repo rate unchanged at 6.5%. Announcing the first bi-monthly policy for fiscal 2023-24 today, Mr. Das said, consequently, the standing deposit facility SDF rate will remain stable at 6.25% and the marginal standing facility MSF rate and the bank rate will continue to be at 6.75%. A pause in the rate hike comes after 6 successive rate hikes. In its first monetary policy review announced in February 2023, RBI had raised the repo rate by 25 basis points to 6.50%. The repo rate has seen an increase of 250 basis points since May last year, primarily to contain inflation. The RBI governor said the announcement of maintaining status quo on policy rates should be considered as a pause and not a pivot, emphasizing that RBI is focused on ensuring price stability given the stable macroeconomic situation. Mr. Das said RBI remains watchful and will not hesitate to take necessary action as and when required. रिजर्व बैंक ने वर्ष 2023-24 के लिए 6.5% सकल उत्पाद वृद्धि दर रहने का अनुमान व्यक्त किया है। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा जीडीपी का 2.7% रहा। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति के खिलाफ अपने प्रयास जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को 4% के दायरे के आसपास बनाए रखने का प्रयास लगातार करता रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक इसमें लक्ष्य के नजदीक तक गिरावट नहीं आती है, तब तक केंद्रीय बैंक के ये प्रयास जारी रहेंगे। एसपी, सबसे बड़ी बात तो ये कि एक और विशेषज्ञों द्वारा आज सुबह तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि इतने अंकों की वृद्धि हो सकती है, संभावित है। ऐसे में ये जो फेरबदल नीतिगत दरों में नहीं हुआ है, उसके पीछे मुख्य कारण आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, जो मैं सोचता हूं, जो मेरी समझ के मुताबिक मैं ये बता सकता हूं कि
जो मुख्य कारण है, क्योंकि अभी आरबीआई लगातार रेट बढ़ाए जा रहा था, जो सिलसिला जो मार्च में शुरू हुआ पिछले साल, उसके बाद लगातार बढ़ोतरी जारी थी। लेकिन उसके बावजूद इन्फ्लेशन को जो पीक रेट था उससे असर पड़ा। इन्फ्लेशन एक बार नीचे आया, फिर वापस एक स्टिकी जोन में जाके अभी स्टेबल हो गया, जहां से और आगे आने वाले महीनों में नीचे आने की संभावना है। लेकिन इन्फ्लेशन ट्राजेक्टरी के साथ साथ जो ग्लोबल हेडविंड्स थी, खासकर जो रशिया यूक्रेन की युद्ध की वजह से प्राइसेस ऊपर गए, कमोडिटी प्राइसेस एकदम से एस्केलेट हुए, उसके बाद फिर अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, खासकर जो बैंकिंग को लेके अमेरिका में, और जो उसका ग्रोथ के ऊपर असर पड़ा है, जिस तरीके से जो डिमांड थी वो थोड़ा स्लैक होनी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से ग्रोथ के ऊपर आने वाले टाइम में काफी असर पड़ सकता था। जैसे कि अभी इस वर्ष तो अभी जो फाइनेंशियल वर्ष हमारा खत्म हुआ है अभी 31 मार्च को, उसका तो हम 7% का अनुमान लगा के चल रहे हैं कि हमारी ग्रोथ जो है 22-23 में 7% के आसपास रहेगी। लेकिन अगले वर्ष के लिए जो हम 6.5% की बात करते हैं, उसके लिए हमें कंजम्पशन को सपोर्ट करना बहुत जरूरी था इस जंक्शन पे। तो वही आरबीआई ने किया। आरबीआई का ये बहुत ही बोल्ड मूव है और बहुत ही एक कैलकुलेटेड स्टेप है, एक ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए और दूसरा इन्फ्लेशन को एड्रेस करने के लिए। इन्फ्लेशन काफी हद तक एड्रेस हो चुका है, लेकिन ग्लोबल हेडविंड्स की वजह से या फिर जो कमोडिटी प्राइसेस, जो कि अभी कुछ कमोडिटीज अभी भी स्टिकी जोन में है, उनकी वजह से, इंटरनेशनल कमोडिटी की वजह से थोड़ा प्राइसेस को, इन्फ्लेशन को इस स्टिकी जोन में थोड़ी सपोर्ट मिल हुई। तो आने वाले टाइम में जो जिस तरीके की प्रोजेक्शंस हैं, जैसे आरबीआई ने खुद ही प्रोजेक्ट किया है कि इन्फ्लेशन को वो इस वर्ष में जो ये फाइनेंशियल वर्ष है, इसमें 5.2 तक लाने का प्रयास करेंगे और फिर इसको जो टारगेटेड ट्रैजेक्टरी है वहां तक लाने का प्रयास करेंगे। तो एक कैलिब्रेटेड मूव की गई है आरबीआई की तरफ से, एक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की और दूसरा ग्रोथ को मेंटेन करने की, क्योंकि अभी इस टाइम पे ग्रोथ के साथ कॉम्प्रोमाइज करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी जो डिमांड है एक साल से, जो मार्च में ये सिलसिला शुरू हुआ, तो उसको धीरे धीरे करते करते उसको शुरू हो गया है। So, Dr. Sharma, is the MPC's decision to pause at the review meeting a reflection of the extreme uncertainty which characterizes the global economy and the risks of its potential spillovers into India? Yes, exactly. Because now the global economy is again in the difficult time, because some like the banking sector, like the developments in the American economy and the continuous Russia-Ukraine conflict, and again there are some vulnerable speeches by the Russia. So all these developments are impacting the global financial markets once again, and there may be some extreme uncertainty and volatility in the financial markets, which may impact the growth trajectory with the spillover effects. So considering all these developments, now RBI has decided to pause the increase in the repo rate and to watch the inflationary scenario. So I believe this is a great move and bold move at this juncture, which was needed at this juncture to support the growth as well as addressing the inflation trajectory, which is very much coming down to the target level in the next few quarters. So what Dr. Sharma, you said a while back is that to a large extent inflation has been contained. And therefore, by keeping the stance at withdrawal of accommodation and keeping the doors open to further rate hikes, hasn't the MPC clearly signaled that the war against inflation is still not over? Or rather, RBI wishes to wait and watch how the situation actually pans out, because there is the threat of El Nino, there is the global banking turbulence, there is the OPEC production cuts, and you also a while back mentioned about the geopolitical tensions. Yes, all these headwinds, all these developments are impacting the minds of the policymakers, that these may have a severe impact on the growth trajectory, because
now inflation, if we go by the numbers, then we are significantly low as compared with the peak of the inflation, particularly in the WPI, which is impacted by the global commodity prices. So that has come down significantly. So going forward, the impact of the wholesale prices, which are now in the very much comfortable trajectory and coming down again. So the impact on CPI will also be visible in the coming months or coming quarters with the deceleration in the wholesale prices. So RBI is clear about the policy environment, and they have taken this step very rightly to support the growth as well as maintaining the inflation. Because the war against inflation is not over, that is right, saying by the Reserve Bank of India, because they will maintain the policy rate. If the policy rate remains 6.5%, that will also not provide a much room to the expansion in the demand trajectory, because high policy rates at 6.5% will not open the opportunities for demand to move high and to escalate the prices. So that is the trajectory of the repo rate at 6.5%, which will have impact on the extraordinary spending by the consumers. Moving on, adding that RBI is keeping a close watch on the turmoil in the banking sector in some developed countries. Mr. Das said the central bank has adopted a prudent approach towards regulations. He, however, assured that the Indian banking system remains sound with strong capital and liquidity buffer besides improved profitability. Dr. Sharma, will this factor, the banking factor, have a bearing during the next MPC meeting? Yes, I would say that our banking sector is comparatively resilient and has proven the resilience during the last many crises like the Lehman crisis. We observed that banking sector was so strong that they absorbed the crisis and recovered significantly in the next very few quarters. Keeping the contagion factor in mind. Sorry? No, keeping the contagion factor in mind. Keeping the contagion factors in mind, I think there will not be much impact on the India's financial sector and financial markets and the banking sector, because we have adequate safeguards for the banking sector, and banking sector is very much strong to deal with any shock from the global economy. बैंकिंग सेक्टर पर चर्चा चली तो खबरों को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा को ले चलेंगे रुपए की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने रुपए से संबंधित सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आरबीआई रुपए के मूल्य में स्थिरता बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करेगा। उन्होंने कहा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब अमेरिकी डॉलर से ऊपर है, जबकि अक्टूबर 2022 में ये 524 अरब 50 करोड़ डॉलर के आसपास था। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से संबंधित एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अनेक देशों और केंद्रीय बैंकों ने इसमें अभिरुचि जताई है। श्री दास ने कहा कि रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण एक दीर्घकालीन लक्ष्य है और इसे धीरे धीरे पूरा किया जाएगा। डॉक्टर शर्मा, यहां पर हम आपका ध्यान रुपए की ओर आकृष्ट करना चाहेंगे और रुपए में हमने कई अवसरों पर देखा है कि उतार चढ़ाव का शिकार होना पड़ा है, खासतौर से गिरने की प्रवृत्ति इसमें देखी गई। तो अभी जो यह टिप्पणी है गवर्नर महोदय की, वह क्या संकेत दे रही और क्या कदम उठाए जाएंगे आने वाले दिनों में रुपए की स्थिरता को बनाए रखने के लिए? देखिए, रुपए की जो स्थिरता है या रुपए के ऊपर जो वल्नरेबिलिटी रहती है या अनसर्टेनिटी आती है कि वह रुपये काफी वॉलेटाइल रहता है, तो उसके पीछे मुख्य कारण है कि हमारा जो ग्लोबल इंटीग्रेटेडनेस है, हमारी जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो इंटीग्रेटेड है। भारत की इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी के साथ काफी स्ट्रांगली इंटीग्रेटेड है। मतलब मायने में अगर हम कहें कि तो हमारी करंट रिसीट्स, करंट पेमेंट्स, कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स, अगर इन चारों को मिला दें तो ये हमारे जीडीपी से ज्यादा जाता है। 100% से ज्यादा ये चारों जो ट्रांजैक्शन हो जाती हैं। तो जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में, जैसे कि भारत की इकोनॉमी
एक्सपेंड हो रही है। हम अभी $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए हैं और आने वाले टाइम में हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, फिर 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। तो अगर इसका हम 100% कंसिडर तो हमारा जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, इंटरनेशनल जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स है वो ट्रिलियंस में जाएंगी आने वाले टाइम में। तो हम खाली डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि डॉलर में जो अमेरिकन इकोनॉमी में जो उतराव चढ़ाव आते हैं और डॉलर में जो एक वनरेबिलिटी रहती है, उसकी वजह से रूपी के ऊपर बहुत इम्पैक्ट आ जाता है। और कई बार हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छे से स्ट्रांगली बिहेव कर रही होती है, लेकिन एडवांस्ड इकोनॉमी में खासकर यूएस में हलचल होने की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है और उसमें रूपी में अनसर्टेनिटी बन जाती है। तो हमें अपना रूपी ट्रांजैक्शन जो है उसको आगे एक स्ट्रेंथ देनी होगी। आरबीआई ने बहुत ही अच्छा कदम पीछे कुछ महीने पहले उठाया है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में रूपी को काफी स्ट्रेंथ मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे देशों के साथ हम रूपी में व्यापार कर पाएंगे जी। के जो लेन देन है वो रूपी में कर पाएंगे, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं वो रूपी में कर पाएंगे। लगभग 18 कंट्री से भी ज्यादा के साथ सहमति अभी तक हो चुकी है कि हम रूपी में आपस में ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर के कैसे हम आगे इसको और स्केल अप करते हैं, उसके ऊपर हमें खास ध्यान देना होगा, सो दैट के जो ये एक प्रोविजन है उसका भरपूर लाभ जो है इकोनॉमी को और बिजनेसेस को मिले। Talking about India's digital payment system, the RBI governor said the system has recorded phenomenal progress in recent times. He stated that United Payments Interface (UPI) and central bank digital currency evoked a lot of interest during the recent G20 meeting of financial ministers and central bank governors that was held in Bengaluru. Mr. Das said RBI is holding discussions with National Payments Corporation of India for increasing the footprint of UPI in international markets, issuing further clarity on RBI's proposals to permit operations of pre-sanctions credit lines by banks through UPI. The RBI governor said it is just an expansion of the United Payments Interface, shrugging comparisons with the buy now, pay later BNPL system. Mr. Das said the aim is to reduce the number of cards that a person needs to carry. Dr. Sharma, how will this move work on a pre-sanctioned credit line which is going to be available for transaction through UPI? If you could elaborate on that. Yes, I think this is a good move because we are very much strong in the international such transactions like the digital transactions, and we are the number one economy. I would say that our adoption of such transactions is very, very high, and people are also more aggressive on this opportunity. So going forward, these credit line provisions will provide a great room to move forward and to convert the economy from the informal to the formal trajectory, which will provide a speed to the economy and strengthen its growth going forward. Okay. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। The Reserve Bank of India has announced that it will develop a centralized web portal for the public to search unclaimed deposits to help beneficiaries to get back their deposits. Currently, the depositors and beneficiaries have to go through the websites of multiple banks to locate such deposits. An unclaimed deposit is an account which does not see any infusion or withdrawal of funds or similar activities by depositors for 10 years or more and is deemed inactive. Recently, public sector banks transferred about 35,000 crore rupees as unclaimed deposits to the Reserve Bank. The RBI governor also announced another centralized portal to simplify and streamline the process of seeking a license or any other regulatory approval. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं शेयर बाजार की ओर। पहले घरेलू शेयर बाजार। घरेलू शेयर बाजार में आज लिवाली तेज रही। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत ब्याज दरों में फेरबदल नहीं करने का निवेशकों पर अनुकूल असर देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से भी मिले जुले संकेत दिखे, जिससे दोनों प्रमुख सूचकांक आज बढ़त में रहे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 144 अंक यानी 0.24% की बढ़त लेकर 59,833 पर बंद हुआ।
उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 42 अंक यानी 0.24% बढ़कर 17,599 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझौली कंपनियों का प्रदर्शन भी अच्छा रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों में 0.7% की वृद्धि हुई। The key domestic stocks today ended on a positive note after the Reserve Bank of India kept the repo rate unchanged. Both benchmark indices gained amid mixed global cues. The Sensex at the Bombay Stock Exchange rose 144 points, 0.24%, to end at 59,833. The Nifty at the National Stock Exchange advanced 42 points, 0.24%, to settle at 17,599. In the broader market at the BSE, the mid-cap and the small-cap indices rose 0.7% each. In the Sensex index, which is a bag of 30 companies, shares of 17 firms rose while 13 fell. Among the biggest gainers include Bajaj Finance, which surged 3%, Tata Motors rose 2.6%, and Bajaj Finserv was up by 1.9%. Among the losers include HCL Technologies, which plunged 1.7%, ICICI Bank shed 1.1%, and Axis Bank fell 1%. In sectoral indices at BSE, 14 sectors logged gains, while 6 witnessed losses. Among sectors, Realty Index added 2.9%, industrial and automobile sectors gained 0.9% each. However, IT and metals slipped 0.5% each, and FMCG was down by 0.4%. The overall market breadth was positive as shares of 2,393 companies rose, while those of 1,133 companies fell. A total of 110 shares remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 81 रुपए 90 पैसे पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक अंतर्दिवसीय कारोबार में 101.89 पर चल रहा था। एसपी बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। कुल मिलाकर बढ़त के साथ बंद हुए हैं बाजार। क्या प्रमुख कारण नजर आ रहे हैं आपको बाजार में तेजी के पीछे? देखिए, मुख्य कारण तो जो रिजर्व बैंक का ये बोल्ड स्टेप है वही इसके लिए एक बाजार के लिए एक पॉजिटिव संकेत बना है। बाजार थोड़ा ऐसे ही मतलब जो मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ा सा चिंतित दिखाई दे रहे थे कि आने वाले जो मूव है आरबीआई का वो कैसा रहेगा, कहीं इंटरेस्ट रेट में कुछ इजाफा होने वाला तो नहीं है, तो जिसकी वजह से अगर कुछ ऐसा होता तो बाजार में थोड़ी करेक्शन या वॉलेटिलिटी संभावित थी। लेकिन आज बाजार ने काफी एक स्टेबिलिटी की ओर आगे का कदम दिखाया है कि मार्केट्स में जो एक अभी वरी थी कि इंटरेस्ट रेट अगर और ऊपर जाएंगे तो ग्रोथ इम्पैक्ट हो सकती है, जिससे कि आने वाले टाइम में जो अर्निंग्स हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट होगा और ओवरऑल इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो वो एक जो अनसर्टेनिटी थी उसमें एक स्टेबिलिटी स्थापित होते हुए दिखाई देती है, जो आने वाले दिनों में भी एक अच्छा पॉजिटिव मूव दिखा सकती है। So the sentiments were pretty good today, as you said, because of the RBI's decision not to raise the interest rates. So going forward, you see that the consolidation is highly likely? Yes, I would say that the consolidation is highly likely, and markets should consolidate at this juncture because many of the worries are almost addressed, despite some global headwinds like Russia, Ukraine, and some global banking crisis. I would say that if these worries are again removed, then markets will move up in the higher trajectory and hold a significant potential to make the highs and maybe the new highs also. जी, आइए चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां अधिकांश प्रमुख बाजारों में बिकवाली की गई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.5% घाटे में रहा। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 1.2% नीचे फिसल गया। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.6% की गिरावट हुई।
उधर निवेशकों की लिवाली से हांगकांग का हैंग सेंग 0.3% लाभ में रहा। हालांकि चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स बिना किसी उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर पर बंद हुआ। यूरोपीय जोन की ओर चलें तो वहां भी समाचार तैयार किए जाने तक लिवाली दिख रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.7% लाभ के साथ कारोबार कर रहा था। फ्रांस के CAC 40 में 0.2% की वृद्धि थी, जबकि जर्मनी का डेक्स 0.3% लाभ के साथ चल रहा था। U.S. stocks ended mixed yesterday on fresh recession fears following new data that suggest the labor market is finally weakening after a year of monetary policy tightening by the Federal Reserve. The Nasdaq Composite shed over 1.1%, while the S&P 500 ended in the red as well at 0.3%. Out of the three major gauges, Dow Jones Industrial Average notched small gains of 0.2%. Dr. Sharma, going forward, how do you see Fed acting now that the RBI has taken a different stance compared to what the Fed has been taking all along? So will the Fed continue to be hawkish or will they change their stand? I think considering the developments, they should now also pause for a while to wait and watch for the economic conditions in the country. Like the RBI has taken up a calibrated move and a very bold step. In the same way, Fed will also act wisely and not increase the Fed rate again because this will impact their reforms and their growth in the coming times. Moving on, the oil prices today rose marginally after Organization of the Petroleum Exporting Countries and Allies, including Russia, collectively known as OPEC+, pledged voluntary production cuts. In intraday trade, Brent crude was trading at around $85.10 per barrel, while West Texas Intermediate WTI crude price was at $80.64 per barrel when reports last came in. Dr. Sharma, a lot of pain seems to be behind us now, and the market, especially Indian markets, are reflecting that. The FIIs have turned buyers consistently for the last 4 trading sessions, but the crude has been volatile. How do you see crude prices going forward? I don't see much upside in the crude prices because of the slowing economic growth in many of the economies. Because many of the economies, like more than 94 economies, will be below the pre-pandemic growth rate. So growth is not going to happen strongly in the current year. So that's why the demand trajectory will not be strong to support the prices of the crude at the higher level. So prices may remain volatile, but the upside move is not anticipated. आइए चलें सर्राफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 72 रुपए घटकर 60,784 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। उधर चांदी में थोड़ी सी लिवाली दिख रही थी। मई में आपूर्ति की जाने वाली चांदी 111 रुपए बढ़कर 74,653 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की ओर चलें तो अंतर्दिवसीय कारोबार में सोना थोड़ा मजबूत दिख रहा था। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोने का मूल्य $2,033.80 प्रति आउंस पर चल रहा था, लेकिन चांदी में कमजोरी थी और ये $25.07 प्रति आउंस पर कारोबार कर रही थी। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से डॉक्टर शर्मा हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। Thank you for being with us, Dr. Sharma. Thank you, sir. Thanks. And before we close, the headlines once again. Reserve Bank of India keeps repo rate unchanged at 6.5%. RBI Governor Shaktikanta Das says policy decision is a pause, not a pivot. And key domestic stocks ends on positive note after RBI's announcement. Sensex rises 144 points to end
above 59,800 mark, while the Nifty settles near 17,600 level. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.